Good afternoon, students, and welcome to Study Planet. Today, we are going to continue with Hamlet. Hamlet, जिसके बारे में हमने रिवाइज किया था पिछले क्लास में, बहुत सारे एलिमेंट्स कब लिखा गया था, इसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ हमने देखा था. आज हम थोड़ा और डीपली इन डेप्थ हर एक एक्ट के बारे में देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, वो कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा मेन हीरो है हैमलेट, उसके साथ. तो आई होप आपको याद होगा कि आपने पहले क्या पढ़ा था. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर. आई होप यू रिमेंबर बिकॉज memory is one of the biggest elements when we study literature. अगर आपको याद नहीं है तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में नहीं बता पाओगे. तो ये याद करने का ट्रिक यही है कि किसके साथ, किस कैरेक्टर के साथ दूसरे का कैसा रिलेशनशिप है, वो आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आप कुछ नया पढ़ें तो भी ठीक है, लेकिन जो पिछला आप पढ़ रहे हैं उसको हफ्ते में एक बार ही रिवाइज कीजिए, नहीं तो वो आप भूलते जाओगे, नया पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे. एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? For examinations, you have to study and remember and revise. Okay? So if you do not revise, you won't remember anything. Right. So we were talking about Hamlet. चलिए हम लोग थोड़ा सा वापस से रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को कितना याद है. Okay? So किस दौरान लिखा गया था? एलिजाबेथन एज. Elizabethan age, right? So this goes from 1558 to 1603. Right? The timeline is very important. ये जो टाइमलाइन है हमारा, ये अगर आपको नहीं याद होगा तो बहुत गड़बड़ होगी. इस टाइमलाइन में कौन कौन से प्लेज लिखे गए थे, कौन कौन सी पोइट्री लिखी गई थी, कौन कौन से प्रोज लिखे गए थे, वो सब आपको याद करना बहुत जरूरी. ठीक है? तो ये एलिजाबेथन एज, इस एज का नाम एलिजाबेथन एज क्यों है? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ was the okay Queen Elizabeth was the monarch of England. She was the monarch of England, right? And I want to tell you people that England is supposed to be the center of arts in so many places. आप जितने भी अच्छे म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक या इंग्लिश थिएटर एक्ट्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादातर आप किताबें पढ़ते हो, प्लेज पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो, ये कहाँ से आता है? मोस्ट ऑफ देम आर इंग्लिश राइटर्स. एंड क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे व्हेन शी वाज द मोनार्क, मोनार्क का मतलब क्या होता है? जिसकी सत्ता हो, जो राज करे. ठीक है? राजा या रानी. तो शी वॉज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड उस टाइम पे. क्वीन एलिजाबेथ कब थी? 1558 से लेके 1603. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल द टाइम. यस. एंड इन्हीं के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंड? शेक्सपियर वॉज William Shakespeare. Shakespeare was the national poet. National poet. Okay? And we have to see how the queen
कि किस तरह से क्वीन ने शेक्सपियर को सपोर्ट किया, ठीक है, उनके थिएटर्स को फंड किया, कैसे किस तरीके से उनके प्लेस को चलने दिया, यू नो ही रोट सो मेनी प्लेस। उस टाइम पे हम देखेंगे अलग अलग लोगों ने पोइट्री और प्ले लिखा। ये आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। 1558 to 1603, right? Queen Elizabeth was the monarch of England, and Shakespeare, he became the national poet in his lifetime, you know, of England. He was the national poet of England. Now, but he is known more for his drama. किसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं? अपने ड्रामा, अपने प्लेज, अपने थिएटर के लिए। पोइट्री भी लिखी है उन्होंने, लेकिन अपने ड्रामा के लिए ज्यादा जाते थे। और एलिजाबेथन एज में क्या? ही वॉज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हु वॉज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज? तो आप बता सकते हो कि शेक्सपियर, he was the national poet and at one point in time. Okay, now we'll see who are the other writers. Other writers during Elizabethan age. So you know that Shakespeare, William Shakespeare was, right? ये तो आपको पता ही है कि विलियम शेक्सपियर was, right? William Shakespeare, then you have Ben Jonson, you have Edmund Spenser, right? So these are, you have the university wits, ठीक है। इसके अंदर में we had 7 playwrights। इसको एक एक करके हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। Yes. Now we know about William Shakespeare. Who was William Shakespeare? William Shakespeare was a poet, he was a dramatist, he was a sonneteer, sonnets भी लिखते थे, poetry भी लिखते थे, plays भी लिखते थे। plays में भी हर तरीके का play हो गया, आपका tragedy हो गया, we had comedy, we had history plays, जिसको हम लोग chronicle plays भी कहते हैं, ठीक है। So all of this was there in William Shakespeare's time. Now, then we have Ben Jonson. Ben Jonson was also a playwright. Playwright का मतलब क्या होता है? जो नाटक लिखते हैं, ठीक है। So William Johnson was also a playwright. And what are the plays he wrote? One of his most important plays is Volpone. Okay, this is L. Right. So he wrote Volpone. Volpone पे क्या होता है? That there is a character whose characteristics, whose qualities are very similar to a fox. Volpone or the fox. The fox की characteristics आपको पता है, fox कैसा होता है? बहुत चालाक, you know, cunning and very चतुर, right? तो Volpone जो आदमी है वो बिल्कुल fox की तरह है, ठीक है। He plays mental games with people around him. He keeps on playing mental games with people around him, ठीक है। किसी को किसी चीज में उलझा दिया, किसी को पैसे का लालच दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको उससे झूठ बुलवा दिया। तो ये प्ले जो है ये बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है. एंड बेन जॉनसन रोट इन द एलिजाबेथन एज. तो इस टाइम के आप जितने भी प्लेस ज्यादातर देखोगे उसमें आप देखोगे कि ट्रेजेडी तो होती है. ट्रेजेडी में देयर इज अ लॉट ऑफ खून खराबा, बहुत सारा ब्लड शेड, ठीक है, सो मेनी डेड बॉडीज ऑन द स्टेज. एंड वोल्पोन में भी ऐसा ही होता है कि एट द एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स डाई एंड द डेड बॉडीज आर पाइलिंग अप ऑन द स्टेज. सारे कैरेक्टर्स के डेड बॉडीज जो हैं वो बिल्कुल स्टेज पे पाइल अप हो जाते. Okay, then you have Edmund Spenser. Edmund Spenser, again a fantastic poet of the Elizabethan age, right? And what he wrote was the Fairy Queen. Spelling इसकी ऐसी है, Fairy Queen. Fairy Queen को हम ट्रांसलेट करें क्योंकि ये थोड़ा मिडिल इंग्लिश में है. If we translate fairy queen, so this would be fair queen. Fair का मतलब गोरा नहीं यहाँ पे. Fair का मतलब जो न्याय करे, जो जस्टिस करे. तो my fair queen. और किसके लिए लिखा गया है ये? क्वीन एलिजाबेथ. ये पूरा पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एपिक. एपिक क्या होता है? जो हम बहुत लंबी गाथा जिसे कहते हैं, ठीक है. तो ये एपिक लिखा गया है क्वीन एलिजाबेथ को, ये डेडिकेट किया गया है बाय एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन. ओके, नाउ लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे कुछ राइटर्स थे, 7 राइटर्स, जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे और वो बहुत अच्छी अच्छी प्लेज लिखते थे वो लोग. इसीलिए उनको हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आए थे? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. I hope this is fine. I want some of you to respond. इतना आपको समझ आया? कोई भी डाउट है तो आप पूछो. We'll discuss some of the details here. If you have any doubts anywhere, anyone? Okay, let me know who all are present today in this class. Right, so we have Sanjeev and we have Shiv. Okay, 2 of my former students. No ma'am. No ma'am मतलब कोई डाउट नहीं है. Fine. Then let's move ahead. थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बात करेंगे जो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से आए थे. एंड दे रोट एक्सीलेंट प्लेज. इनमें से सबसे बड़ा नाम किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो. Christopher Marlowe, one of the greatest playwrights, one of the greatest writers of his time, of the Elizabethan age. And the most important book that he wrote was Dr. Faustus. Dr. Faustus. Right. Dr. Faustus is one of the most important characters in English literature. ठीक है. डॉक्टर फॉस्टस जैसे आप नाम से देख रहे हो, डॉक्टर, बट what was he actually? He was a scholar. Okay, he wanted to study everything. He wanted to know about the world. पूरी दुनिया में जितनी भी पढ़ाई थी सबके बारे में जानना चाहते. This character, Dr. Faustus. तो ये अचीव करने के लिए what he does is he makes a pact with the devil. ठीक है, शैतान से एक पैक्ट बना लेते हैं. ओके, ये बोलते हैं कि चलो, आई विल सेल माई सोल टू यू. मैं अपनी आत्मा आपको दे देता हूँ, उसके बदले आप मुझे दुनिया का सारा नॉलेज दे दो. ठीक है, ये डॉक्टर फॉस्टस में होता है. एंड ही इज एन ओवर अचीवर. आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा जो एकदम सब कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए या कुछ जानने के लिए
या सक्सेस पाने के लिए, तो ही इज दैट पर्सन. दिस कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टस इज दैट पर्सन who can achieve anything, and what he does is he makes a pact with the devil. ठीक है. अब आप पूछोगे कि इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, why are we studying about this, these writers? क्योंकि ये सारे एलिजाबेथन एज में आते हैं, और एक एज में अगर आपको राइटर्स के बारे में मालूम है या याद है तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है कि अच्छा चलो इस एज में ये राइटर्स हैं, तो हम लोग उनके टेक्स्ट को एक जगह कैटेगरी में, एक कैटेगरी में डाल दें. ठीक है. तो आप ये मत सोचना कि कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजलेस है. ओके. नो इंफॉर्मेशन इज एवर यूजलेस. कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी काम आएगा ही. सो डोंट एवर थिंक दैट ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, बेकार है, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर लिटरेचर स्टूडेंट. जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तब आपको सब कुछ जानना बहुत जरूरी है. कहीं से भी कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. So yes, he makes a pact with Satan. ठीक है. And what does he say? He says that I'll sell my soul. मैं अपनी आत्मा बेच दूंगा, उसके बदले मुझे सब जानना है. लेकिन एंड में क्या होता है, आपको पता है कि गुड और इवल कैसा होता है. इवल जो है वो आपको मैनिपुलेट करेगा. ठीक है. वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा. इविल शैतान जो होता है. गुड आपको अच्छी राह पे लेके जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्टस को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है. ठीक है. ही यू नो Satan here, Satan plays a lot of mental games with him and he does not know what to do in the end. ठीक है. तो at the end क्या होता है कि finally he is condemned to hell. मतलब हमेशा हमेशा के लिए नर्क में भेजा जाता है डॉक्टर फॉस्टस को. और जो भी वो अचीव करना चाहता था, दिस कैरेक्टर ऑफ फॉस्टस, व्हाटएवर फॉस्टस वांटेड टू अचीव, ही इज अनएबल टू डू सो. ही फेल्स इन अचीविंग एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज डेविल, सेटन हियर इज अ ट्रिकस्टर. ठीक है. हम कभी भी सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते या भरोसा नहीं कर सकते. गलत राह पे जाएंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा. राइट. सो दिस इज हाउ ही एंड्स. ये भी एक ट्रेजेडी है हैमलेट की तरह. हैमलेट क्या है बताओ आप लोग, व्हाट इज हैमलेट? अगर आपको कुछ याद है तो टेल मी. जो भी एलिमेंट्स आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग देन प्लीज लेट मी नो. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कुड recall anything at all. It's a tragic play. Correct. It is a tragic play. What else? Can you name some of the characters, the themes? कितने एक्ट होते हैं, एक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब आप बता सकते हो तो that would be really good. Five acts. Correct. ट्रेजेडी में हमेशा आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में स्पेशली देखोगे कि 5 एक्ट्स होते हैं. एक्सपोजिशन होता है आपका, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन, जिसे हम कैटास्ट्रोफी भी बोलते हैं. व्हाट एल्स? व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स के नाम बता दो अगर आपको याद है तो. इफ यू रिमेंबर एनी ऑफ दीज. नो? ओके, विल डिस्कस मोर अबाउट इट. राइट. तो इसमें से एक यूनिवर्सिटी विच में से एक है क्रिस्टोफर मार्लो. राइट. देन वी हैव रॉबर्ट ग्रीन. देयर आर सो मेनी. वी हैव रॉबर्ट ग्रीन. We have George Peele. We have Thomas Kidd. We have Thomas Nash. We have Thomas, wait,
I'll not mention kid here right now. Thomas Lodge. We have Lily, and we have Thomas Kidd. So these are seven यूनिवर्सिटी विट्स, इनको हम एक ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है. Who are these? These are university wits. These are the 7 university wits. Okay, after this is done, we will start with Hamlet. Hamlet के elements जो आपको बताए थे, I hope you remember, ताकि उस पर हम लोग काम करके आगे बढ़ सके. Otherwise, it'll be difficult. Okay? Right. I think you've got enough time with this. Okay, let's revise once again. Who are these university wits? We have Christopher Marlowe, we have Robert Greene, we have George Peele, we have Thomas Lodge, Thomas Nash, Thomas Kidd, and Lily. Okay, so these are some of the university wits, जिसमें से हमने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में ज़्यादा बात की है. Let's move on to the next page. And again, we come back to Hamlet. Hamlet was written in the year, wait a second, 1600. Okay, किस साल परफॉर्म किया गया था? 1600 में परफॉर्म किया था पहली बार. ओके, एंड ये किसके बारे में है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क. Who is the Prince of Denmark? It's Hamlet. Now, who are the characters? Okay, some of the characters here are Claudius, you have Gertrude, you have Polonius, you have Lytus, you have Ophelia, you have Horatio, you have Bernardo, you have Rosencrantz, Guildenstern. ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. Yes, Fortinbras. Fortinbras is an important character. Now, let's discuss. Right. Claudius is the present king of Denmark. King of Denmark. After his brother's death, जैसे ही क्लॉडियस के भाई की मृत्यु होती है, he becomes the king of Denmark. ठीक है, और भाई को किसने मारा है? क्लॉडियस ने खुद ने अपने भाई को मारा है राजा बनने के लिए, फॉर पावर. ठीक है, आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस में देखा होगा कि जिनको राजा बनना होता था वो अपने सारे भाइयों को मार देते थे, राइट.
and that's what Claudius does here. Now Gertrude is Hamlet's mother. Hamlet's mother. Okay. Hamlet's mother, after his husband, the King of Denmark, King Hamlet, passes away, what she does? They marry. So Gertrude, she marries Claudius. Gertrude किससे शादी कर लेती है? Claudius से. Okay. Now Polonius कौन है? Chief advisor. He is the chief advisor of Claudius. ठीक है. हर राजा को कोई ना कोई एडवाइजर होता है, सहायक, जो सुझाव दे. ठीक है. पोलोनियस इज द एडवाइजर, सलाहकार, जो सलाह दे, सुझाव दे. तो पोलोनियस इज द chief advisor of Claudius. Now, Polonius has two children. He has two children. One is Laetus, son, and Ophelia is daughter of Polonius. She is also Hamlet's lover. She is also Hamlet's lover. Now, who is Horatio? Horatio is Hamlet's friend. Bernardo कौन है? He is one of the ministers. He is a minister. And Fortinbras आपको बताया था, Prince of Norway. Okay. Now this is your character list. You take care of these characters, think about them. I'll ask you some questions if you know them or not. इनके बारे में थोड़ा आप बैठो, ध्यान दो जो जो लिखा हुआ है रेड में, कि how are they related to the protagonist? Who is the protagonist? Hamlet. Protagonist का मतलब क्या होता है? मेन हीरो. Main hero. Okay, I hope this is clear now for everyone. We have Claudius, Gertrude, Polonius, Laetus, Ophelia, Horatio, Bernardo and Fortinbras, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं. So if you have any issues, you can just let me know any time. Okay, now let's discuss about the 5 acts. कौन से एक्ट में क्या होता है? तो we'll talk about Act 1. ठीक है, Act 1 में क्या होता है? Okay. So Act 1 में we find in the first lines of the chapter of this play, in the first line itself, what do we find? We find about King Hamlet's ghost. आपको बताया था इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पहली एक्ट में देखते हैं, किसको देखते हैं हम? किंग हैमलेट के घोस्ट को. ये देखो आप पहली लाइन, आई एम रीडिंग इट आउट फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, Bernardo enters and he says, who's there? Who's there का मतलब क्या होता है? कौन है? ओके, नहीं, आंसर मी, स्टैंड एंड अनफोल्ड योरसेल्फ, मतलब अपनी शक्ल दिखाओ, सामने आओ, राइट? एंड Bernardo says, long live the king. Okay, long live the king. So nobody knows. Okay, oh farewell honest soldier who hath relieved you. And what do they see? यहाँ पे किसको देखते हैं? They find the ghost of
किंग हैमलेट, राइट। और कौन ढूंढता है? बर्नार्डो को दिखता है। हु सीज? बर्नार्डो। ही फाइंड्स द ghost of King Hamlet, right? Now we see the political relationship. The political relationship of Norway and Denmark. ठीक है, इसको सबसे अच्छे से आप जान पाओगे when you look carefully at our relationship with our neighbors. Okay, इंडिया पाकिस्तान में कैसा रिलेशनशिप है? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, भड़काऊ, राइट? As citizens of India, we are supposed to what? Condemn Pakistan, right? Pakistan and India, they have terrible political relationship. हमारी जो इंटरनेशनल अफेयर्स है वो बिल्कुल खराब है. ओके, वी डू नॉट ट्रस्ट आवर नेबर्स, वी आर ऑलवेज एट वॉर विद देम. हम हमेशा युद्ध में होते हैं उनके साथ. वी कैन नेवर ट्रस्ट देम, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी फाइंड इन Norway and Denmark. What do we see in Norway and Denmark? That they are always fighting. और इनकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप से हमको ये पता चलता है कि किंग हैमलेट, नॉट प्रिंस हैमलेट, प्रिंस हैमलेट इज डिफरेंट, ठीक है? किंग हैमलेट kills the king of Norway. And Prince Fortinbras wants revenge. What does he want? He wants revenge. Okay, and that's why he is planning to attack Denmark. Okay, Hamlet कहाँ रहता है? डेनमार्क में. Prince Fortinbras is from Norway and he is planning to attack Denmark. क्यों? क्योंकि his father was killed by King Hamlet in a battle. Battle क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है? So we see these events happening in Act 1. और भी है, okay? Now you look at it carefully, take down some notes, take some screenshots so that it's easier for you to remember, right? Take some time to write this. Okay, so I gather only Shiv is here. Shiv, do you have any doubts till here? So that we can clear some of the doubts. If you have any doubt. No problem yet. Good, good, good. Okay. So we'll move on to the next page and we'll see what happens, right? So the ghost is revealed to Horatio. Okay, again, this is from Act 1. The ghost is revealed to Horatio. And who is Horatio? Horatio is Hamlet's friend. All these events are taking place in Act 1. ये सब जो कुछ भी हो रहा है, it is taking place in Act 1. Okay? Now, we find at the end of Act 1, Hamlet
finally meets his father's ghost. ठीक है, this is very important. Okay, I'll give you the lines also. Okay, just let me find the lines. Yes. Right. The lines here are, after he meets his father, Hamlet, he says this time is out of joint. Oh, cursed spite. That ever I was born to set it right. That ever I was born to set it right. What does this mean? When he finally meets his father's ghost and he finds out, Hamlet को पता चल जाता है that his uncle Claudius has killed his own father, right? And Claudius has killed his own brother. So what happens after that? Hamlet is enraged, okay? And he wants revenge. उसे उसमें बदले की भावना आ जाती है. And this is when he says, this time is out of joint. इसका मतलब क्या है कि समय जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो चुका है, बिगड़ चुका है बिल्कुल. This time is out of joint. हम लोग बोलते हैं ना समय खराब है, right? So this is what he means. This time is out of joint, oh cursed spite, that ever I was born to set it right. ठीक है? Now it is my responsibility to make everything right, to do justice to my own father. ठीक है, कि मैं अपने पिता को न्याय दिलाऊं, बदला लूं उनकी मृत्यु के लिए, right? And this all happens in the first act. So I'm not going into very much details because in every act you will find how many scenes are there. Let me see. Okay. Here we have 5 scenes in Act 1. And obviously this is the demo class for you people. That's why I'm not going into much detail. Now, I hope you've taken this. So let's move on to the next page and then we'll discuss Act 2 with you. Act 2. What are the events that take place in Act 2? Right. We see 2 foreign students come to Denmark. उनके नाम क्या है? Rosencrantz and
गिल्डेनस्टर्न, ठीक है, रोजेनक्रांज एंड गिल्डेनस्टर्न, they come to meet who? They come to meet Claudius. They have come to meet Claudius. And Claudius is absolutely worried because उसको लगता है कि हैमलेट के साथ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, हैमलेट शायद पागल हो गया, ठीक है, and this is why he tells Rosencrantz and Guildenstern कि पता लगाओ उसके साथ चल क्या रहा है हैमलेट के साथ, what is going on with Hamlet. Now we see, ये तो एक सीन हो गया आपका, दिस इज वन सीन, सीन वन. अगले सीन में हम देखते हैं कि द किंग ऑफ नॉर्वे इज होल्डिंग और रिब्यूकिंग King of Norway is scolding or rebuking Fortinbras. Right? क्यों? Why are they scolding? Why is he scolding Prince Fortinbras? He says that you will not attack Denmark. ठीक है? Because Fortinbras also, he's very enraged because his father was killed. And now he wants revenge. उसको क्या चाहिए? बदला चाहिए. So what he does is he plans an attack on Denmark. वो क्या चाहता है कि मैं डेनमार्क पे अटैक करूं, ठीक है, और वार करूं उनके ऊपर एंड जीत जाऊं वहां पे, ठीक है. तो जो किंग ऑफ नॉर्वे है, फोर्टिनब्रास का अंकल, he is absolutely against this idea. He does not want Fortinbras to go to battle. ठीक है. Now, in another scene we find Hamlet's behavior. His descent to madness. Yes. So now his behavior keeps getting strange. With Claudius, with Gertrude, you see that he's not acting properly at all. Now let me find some instances from the book to show you how he is slowly going mad. Right? Hamlet is going mad. Yes. And he says, I'll have to use another page, but I'll come back to this to explain. Hamlet की madness को हम कैसे देखते हैं? He says, words, words, words. Who talks like this? ऐसी बातें कौन बोलता है? Only mad people can say something like this, right? And Hamlet, either he has gone mad or he is pretending. ऐसा वो नाटक कर रहा है कि वो पागल हो चुका है, या तो वो सच में पागल हो चुका है. लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि he was just pretending. वो बस acting कर रहा था, right? And he says, words, words, words. And Polonius says, what is the matter, my lord? क्या बात है? तो हैमलेट बोलता है, बिटवीन हु? यू नो, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है. एंड पोलोनियस सेज, आई मीन द मैटर दैट यू रेड माय लॉर्ड. आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में. एंड हैमलेट सेज, स्लैंडर्स सर,
For the satirical slave says here that old men have grey beards. Okay, so now he is completely saying anything, gibberish. ठीक है, जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है. He is pretending to be mad. Okay. And then Polonius says, aside. Aside मतलब इससे दूर होके Polonius says, इससे हमको पता चल जाता कि लोग क्या सोच रहे हैं. That Hamlet has completely gone mad. Though this be madness, so Polonius understands that since Hamlet is absolutely gone crazy now, he's gone mad and he's saying anything he wants. जो मन में आ रहा है वही he is saying. Okay. Now let's discuss a little bit of this. Act 2 में हमने क्या देखा? There are two students, foreign students who have come to Denmark. And who are they? They are Rosencrantz and Guildenstern, right? These two characters, they come to Denmark. कौन बुलाता है? Claudius, the king of Denmark. Claudius himself is calling Rosencrantz and Guildenstern. और दोनों को बिठा के ही explains कि तुम लोग पता लगाओगे कि हैमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है. Okay? And what will you do? You will take him with you. उसको अपने साथ लेके जाओगे जहां से तुम लोग आए हो, right? And yes, as I've already mentioned, they come to meet Claudius. Now, in another scene, we find that King of Norway is scolding or rebuking Fortinbras. ठीक है? Why is he scolding? क्योंकि Fortinbras has planned to attack Denmark. And the King of Norway is absolutely against that idea. He does not want कि Fortinbras जाके डेनमार्क पे अटैक करे. In another scene, we find how Hamlet is completely gone mad. He does not want to do anything. He keeps on blabbering. He says anything that comes to his mind. And we see how he descends into madness. So we find his descent to madness. And हमको कैसे पता लगता है इस madness के बारे में? ये dialogues को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा. Words, words, words. ठीक है, शब्द शब्द शब्द. एंड पोलोनियस ये सब सुन के साइड में बोलता है तो दिस बी मैडनेस. ठीक है, शायद ये पागलपन है. ओके, तो टेक 2 minutes to process all of it. Make notes if you want. If you want to go back to another slide, you can tell me. Okay. Okay, now we come back to Act 3. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है बिकॉज दिस इज आवर क्लाइमैक्स. Act 3 is our climax. Now what exactly is a climax? Shiv, can you please explain what a climax is? Event, main event. Yes, climax is your main event. जिसके बाद आप पीछे नहीं मुड़ सकते. वो हो गया तो सबकी लाइफ चेंज हो जाती है. ओके. And what do we find? इसमें हम देखते हैं Hamlet's madness at its height. Hamlet's madness at its height. ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो हम इस एक्ट में देखते हैं. टू बी और not to be, that is the question. To be or not to be, हम रहे या ना रहे, यही सवाल है. एंड हम देखते हैं कि Hamlet has so many soliloquies. Soliloquies. Now what is a soliloquy?
A soliloquy is a figure of speech, is a device in which the character speaks to himself, speaks to himself and the audience. Right? What is a soliloquy exactly? Where the character speaks to himself, जो character है वो खुद से बात करे और audience से, बाकी जो स्टेज पे हैं वो नहीं सुन सकते जो भी वो बोल रहा है. तो दैट इज अ soliloquy here. और ये एक soliloquy है जिसमें हम देखते हैं कि हैमलेट बोल रहा है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. This we find in Act 3. That is our, yes. Now, after this, we find Hamlet and his friends, they form a play. They put on a play for everyone to see. तो इसको हम बोलेंगे play within a play. Hamlet तो पहले ही एक प्ले का नाम है, The Tragedy of Prince Hamlet of Denmark. इसमें हम एक और प्ले देखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो. द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, ठीक है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग पॉप कल्चर में अगर देखें तो इफ यू सीन द मूवी हैदर डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज, उसमें क्या होता है that the main character Heather, he comes to know that his uncle has killed his father, and to prove this he puts on a play, right? हमने देखा है वो प्ले में गाना बजता बिस्मिल. अगर आपको शेक्सपियरियन लिटरेचर पसंद है तो आप विशाल भारद्वाज के बहुत सारे मूवीज देख सकते हो जो उन शेक्सपियर के प्ले से इंस्पायर्ड है. There's so many of them. We have Makbul, we have Omkara, we have Heather, all these movies. Okay? तो हम देखते हैं इसमें इट इज अ प्ले विद इन अ प्ले. द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, उसमें क्या दिखाता है कि एक भाई ने अपने भाई को मार दिया और मार के वो राजा बन जाता है. तो ये सब देख के क्लॉडियस को समझ आ जाता है एंड ही फील्स वेरी गिल्टी. ओके, ही स्टार्ट्स फीलिंग वेरी गिल्टी और उसके शक्ल पे दिख जाता है. हिज फेस रिफ्लेक्ट्स दैट, राइट? यस. So Claudius's what happened? Reflects anger. तो उसके मुंह में गिल्ट, शर्म, गुस्सा सब कुछ झलकता है. इससे हैमलेट को पूरी श्योरिटी हो जाती है कि दिस इज द मर्डरर, क्लॉडियस इज द मर्डरर. राइट? Now very important element here is Hamlet plans to kill Claudius. He plans to kill Claudius, but he does not kill Claudius. Why? He finds Claudius
इन प्रेयर, ठीक है, लेकिन वो उसे इसीलिए नहीं मारता है क्योंकि वो देखता है कि क्लॉडियस इज प्रेइंग टू गॉड। तो इससे हमें ये भी समझ आना चाहिए दैट हैमलेट इज अ रिलीजियस प्ले। इसमें रिलीजन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज रिलीजन प्लेज अ पिवटल रोल इन दिस प्ले। आप देखते हो कि ही प्लान्स टू किल हिम एंड ही हैज अ डैगर विथ हिम, जैसे खंजर एक लेके जाता है वो, बट व्हेन ही फाइंड्स क्लॉडियस प्रेइंग टू गॉड, उसे खुद में लगता है कि नहीं, अभी आई कैन नॉट किल हिम। व्हाई? because he is praying to God, and while he is in prayer I cannot kill him, and that's why he doesn't kill Claudius. But after this scene, Hamlet kills Polonius in Gertrude's room. Gertrude कौन है? Hamlet's mother, ठीक है। एंड दोनों के बीच बातचीत होती है, झगड़ा होता है गर्ट्रूड और हैमलेट के बीच। इसी दौरान गर्ट्रूड बहुत जोर से चीखती है कि somebody save me, उसे लगता है कि हैमलेट उसे मार देगा, एंड शी क्राइज आउट somebody save me। तो पीछे से पोलोनियस आ जाता है, लेकिन हैमलेट को लगता है कि वो पोलोनियस नहीं है, वो क्लॉडियस है, एंड दैट इज व्हाई ही किल्स हिम, ही किल्स पोलोनियस। लेकिन उसे ये लगता है कि शायद वो क्लॉडियस है, इसलिए उसने गलत आदमी को मार दिया। ओके, so this is how this scene ends. Okay, so Polonius dies. Polonius dies. He dies. Okay, I hope this is fine. Now let's move on to Act 4. Now, Act 4 is very simple, is very short also. What happens in this? Now, Ophelia, when she finds that when Ophelia finds that her father is dead, she is absolutely disoriented. She starts going mad, descends into madness, right? When she finds that her father is no more. Okay, and after some time, what happens? There is the theme of suicide here. So Ophelia drowns. Okay, वो नदी में डूब जाती है, and we see there is an element of suicide, the theme of suicide, right? This is one of the major events of Act 4. Now, another important event is the fencing match between Lytus and Hamlet. So Lytus and Hamlet, इन दोनों को भिड़वा दिया जाता है बाय क्लॉडियस। क्लॉडियस ऑर्डर्स देम, क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि हैमलेट ने पोलोनियस को मारा है,
तो पोलोनियस का बेटा जो लार्टस है, he wants revenge, okay, and because he wants revenge, what does he do? He starts, you know, asking them to fight in a fencing match. Now fencing is a sport जिसमें आप देखते हो कि पतली पतली तलवार होती है, ठीक है, एंड उससे लड़ाई करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हार जीत कैसे पता चलेगा? इफ वन पर्सन हैज किल्ड द अदर पर्सन, जो आपका ओपोनेंट है वो मर चुका है, तब आप जीत गए। ओके, और ये फेंसिंग मैच चलता है बिटवीन लाइटस एंड हैमलेट। नाउ दिस इज, इसकी अनाउंसमेंट होती है, ओके, इट्स अनाउंस्ड कि इनके बीच फेंसिंग मैच चलेगा। एंड द लास्ट सीन, लेट्स डिस्कस द लास्ट सीन हियर। Act 5, the resolution. Right? Now, some of the important elements in this is Ophelia's funeral. Okay? अब ओफिलिया जो कि डूब चुकी है, she has died and now she is being taken to the funeral. लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि दिस इज अ केस ऑफ सुइसाइड, तो वो लोग उसको फ्यूनरल, प्रॉपर रिलीजियस फ्यूनरल करने से मना कर देते हैं वहां पे। ओके, एंड हर बॉडी इज केप्ट देयर, राइट। इसी टाइम पे हैमलेट जो है, हैमलेट रिवील्स हिज लव फॉर हर। ओके, उसने पहले कभी नहीं बताया था, बट इट इज एट दिस मोमेंट दैट हैमलेट रिवील्स हिज लव फॉर हर, राइट। देन वी सी फेंसिंग मैच के दौरान क्या क्या होता है। वेट, let me get to the next page to describe it. Okay. During the fencing match, what happens? Now, Hamlet and Lytus hurt each other with poisoned swords. ठीक है, उनके तलवार के टिप पे उन्होंने पॉइजन लगा रखा, जहर लगा रखा है। So if they get hurt, that poison will get into their bloodstream. और क्या होगा उससे? They will be poisoned and they will die. Right? Hurt each other with the poison swords. Yes. Next, you find that Gertrude drinks a poisoned drink. Okay, you see how the dead bodies are piling up now. Right. Hamlet kills Claudius. Hamlet dies due to his injury in the fencing match. And he says
The rest is silence. The rest is silence. So very iconic lines. We have very iconic lines here. The rest is silence, which means that अब कहानी खत्म, right? इसके बाद आप कोई कहानी नहीं सुनोगे. And what happens? Fortinbras claims the throne. तो लास्ट में राजा कौन बन गया? Fortinbras बन गया. Okay. So these are the events that take place in all of the 5 acts. ये हमने देखा अभी. Okay? Now, I hope you have no issues here because we have already discussed all the 5 acts, not in a very detailed way, but we have discussed the main events that take place in each of these plays, right? Now, if you have any doubts, Shiv, if you have any doubt anywhere, you can ask me. Yeah, I hope you're paying attention. Throne means, throne मतलब होता है राज, गद्दी, राजभार. Okay? Yes. Okay, so I hope you've understood everything, and we'll conclude the class for today. We'll conclude the class for today because we've already discussed all of the events that take place in all of the 5 acts, and we will discuss them in great detail. We'll discuss about the themes, the main events. We've already discussed the main events, but we'll discuss the dialogues, which character utters what word, utters what monologue. We'll discuss some of that. We'll discuss some trivia. कौन से critic ने क्या बोला था ये भी हम discuss करेंगे. ठीक है? So I hope you like the class and we'll be back again after this. Right? Thank you so much.